ये है ज़ैनब की कहानी, जिसने सब्र, अक्ल और हिम्मत से जुल्म के अंधेरों को रोशनी में बदला। एक परसुकून गांव में करम दीन नामी नेक दिल इंसान अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। बीवी के इंतकाल के बाद उसने तन्हा बेटियों की परवरिश की। उनमें सबसे छोटी ज़ीनब सबसे समझदार और होशियार थी। एक दिन एक चालाक बीवा औरत रोज बहाने बनाकर उनके घर आने लगी। कभी आग मांगती, कभी पानी, लेकिन हकीकत में वो करमदीन के खाने में जहर मिला रही थी। ज़ीनब को शक हुआ, लेकिन उसकी बहनें उसकी बात पर हंसती रहें। फिर एक दिन करमदीन ने औरत को रंगे हाथों पकड़ लिया, मगर कुछ ही दिनों बाद उससे शादी कर ली। यही लम्हा बेटियों के लिए एक तकलीफ दह मोड़ था। शादी के बाद सौतीली माँ का असल चेहरा सामने आया। वो बेटियों से नफरत करती, इन्हें सख्त मशक्कत करवाती और भूखा रखती। एक दिन बहनें जंगल हैं गईं, जहां उन्हें एक नेक बुजुर्ग मिले। बुजुर्ग ने उन्हें 3 जादुई अनार दिए, जिनमें बरकतें छिपी थीं, लेकिन सौतीली माँ ने वो दरख्त कटवा दिया। फिर बुजुर्ग ने एक दूध की नदी बहा दी, लेकिन औरत ने उसे भी मुट्ठी से बंद कर दिया। फिर उसने करमदीन को धोखा दिया कि अगर वो अपनी बेटियों को मार दे तो वो तंदुरुस्त हो जाएगा। गमज़दा करमदीन ने बेटियों को मारने के बजाय जंगल में छोड़ दिया और बीवी को जानवरों का खून दे दिया। बेटियां बेसहारा जंगल में रह गईं, मगर किस्मत इन पर मेहरबान होने वाली थी। 3 नेक दिल शिकारियों ने उन्हें पाया। उन्होंने तीनों बहनों से शादी की। ज़ैनब की नासिर से शादी हुई और उनके यहाँ एक खूबसूरत बेटा है पैदा हुआ। ज़ैनब ने हर दुख, हर साजिश और हर नाइंसाफी को बर्दाश्त किया। उसके सब्र, अक्ल और सच्चाई ने उसे कामयाबी अता की। यूं वो जुल्म की रात से निकलकर खुशियों की सुबह में दाखिल हो गई। This is the story of Zainab, who turned the darkness of oppression into light through patience, wisdom, and courage. In a quiet village lived a kind-hearted man named Karam with his 3 daughters. Since his wife's death, he had raised them alone. The youngest daughter, Zainab, was the most sensible and the brightest of all. One day, a cunning widow began visiting their home frequently. She would ask for small favors, fire, water, but secretly, she was poisoning Karamdin's food. Zainab grew suspicious, but her sisters mocked her concerns. Then one day, Karamdin caught the woman. Surprisingly, he soon married her, ushering in a painful chapter for his daughters. After the marriage, the woman showed her true colors. She treated the daughters harshly, forced them to work, and kept them hungry. While wandering in the forest one day, the girls met a wise elder who gave them 3 magical pomegranates filled with blessings. But the stepmother destroyed the tree out of jealousy. The elder then created a river of milk for the girls, but the woman blocked it with mud. She even deceived Karamdin into believing that killing his daughters would cure him. Torn by grief, Karamdin abandoned his daughters in the forest and gave his wife animal blood. Alone and helpless, the girls' fate took a turn for the better. 3 kind-hearted hunters found them. They married the sisters, and Zainab's marriage to Nazeer was blessed with a beautiful son. Zainab overcame every hardship, every betrayal, and every injustice. Her patience and wisdom guided her to a life of peace. She emerged from the night of oppression into a morning filled with joy and hope.